तो जैसा कि हम देख रहे थे क्लास 10 साइंस वन का चैप्टर नंबर 3, दैट वाज द केमिकल रिएक्शंस एंड द इक्वेशंस। तो अब तक हमने देख लिया था व्हाट आर द वेरियस डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एक बार पिछला जो पार्ट था उसका रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को। सो बेसिकली फर्स्ट इज द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, then second is the size of the particles of the reactant, concentration of the reactants, temperature of the reaction, catalyst. These are all the factors that were affecting, that were actually playing an important role in the either increasing the speed of the reaction or decreasing. So we have seen various different examples and we have understood about that. तो आगे हमें देखना है, हमने डू यू नो भी देख लिया था, तो आगे हमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन, इन दो कंसेप्ट को हमें क्लियरली समझ लेना है। सो so oxidation and reduction reaction. So many types of the substances gives the reactions called as the oxidation and reduction. Let us learn more about these reactions. तो हमें एक रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, वी हैव गिवन वन एक्सपेरिमेंट अबाउट रिगार्डिंग दिस ओनली। सो वी आर टेकिंग द मैग्नीशियम रिबन and when we are heating it on the Bunsen burner, that means we are reacting the magnesium with the oxygen gas which is present in the atmosphere. When magnesium reacts with the oxygen, leads to the formation of magnesium oxide. So ये reaction यहाँ पर दो oxygen balance. And next reaction is carbon with O2 forms CO2. This is also the very common and basic reaction. That is when carbons react with the oxygen molecule, leads to the formation of carbon dioxide compound. हेलो हेलो। तो जल्दी आ जाइए, मतलब join fast and also share the link in your groups and all. So mostly we will be focusing on concentrating on the part which we are going to learn. Later on, at the end, I will try to take the comments. So please be at the end, as this will be going to be an important session, as the oxidation and reduction reaction mostly asked in the exams a many or lot of the times. So here, magnesium oxygen reaction, we have seen that magnesium oxide is formed. Then we have seen that about the carbon, when reacts with the oxygen leads to the formation of carbon dioxide compound. Magnesium hydride on decomposition gives magnesium plus hydrogen gas. CH3CH3. So CH3CH3, this is one of the compound. So for this, we are going to see the detail. We are having one chapter named as the, that I will show you here.
that is one of the major chapter, that is the carbon compounds. So in this chapter, we are going to see about various different such kinds of the various different elements, compounds, and all how they are formed, and all regarding that stuff. So basically, we are here. See here, what will be the name of this compound? As we have studied in the lower classes also, as we have to count the number of carbon. C2, C2, H6, C2H6. It is ethane. It is ethane. So here we are seeing the when ethane leads to formation of CH2CH2, that is C2H4. As we can see, here is the single bond, here is the double bond. This is ethene, ethene, ene. So ethane leads to the formation of ethene by giving the hydrogen gas. So तो ये यहाँ पर हमें क्या बोला गया है? In the reactions 20 and 21, a reactant combines with oxygen, whereas in 22 and 23, hydrogen gas is removed from the reactant. All these are examples of the oxidation reaction. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि magnesium when reacts with oxygen forms magnesium oxide, carbon with reaction with oxygen forms carbon dioxide, magnesium hydride gives magnesium and hydrogen gas is released, ethane gives ethene and hydrogen gas is evolved. So this is all which we have seen here. तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं? सो इन द अबव टू रिएक्शन दैट इज 20 and 21, we see that the reactant gets combining with the oxygen leads to the formation of some compound. Here also the oxygen is reacting leads to the formation of compound, but in these two reactions that hydrogen gases evolve. So what is the main basic conclusion which is getting drawn from this? So, the chemical reaction in which a reactant combines with oxygen or loses hydrogen to form the product is called as the oxidation reaction. तो समझ लेना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है. सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली ये है कि जब या तो ऑक्सीजन कंबाइन होगा या तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा. So when either the reactant gets combined with the oxygen or loses the hydrogen, then that types of the reaction are called as the oxidation reaction. Next, आगे हमें दिया गया है some oxidation reactions are brought about by use of specific chemical substances. For example, ethyl alcohol C2H5OH when reacts with potassium dichromate. Remember the name of this K2Cr2O7. It is the potassium dichromate. And H2SO4, ये क्या है? This is also one of the interesting part. Why the oxygen is written here in this type of the bracket? So when the oxygen which is represented in the represent as like this, then it is called as the nascent oxygen. What it is called as nascent oxygen. Nascent oxygen. So we will be seeing about this when we are going to study about the science group regarding this stuff. So when ethyl alcohol in the presence of the nascent oxygen K2Cr2O7 and H2SO4, there leads to the formation of CH3COOH, that is the acetic acid. Remember, this is also one of the important reaction from the exam perspective and all. But also we have to remember how this reaction is taking place as also in the presence of the nascent oxygen also. So here is the acidic potassium dichromate makes oxygen available for the oxidation of the reactant ethyl alcohol. Such chemical substances which bring an oxidation reaction by making oxygen available are called oxidants or oxidizing agents. तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और एक और होता है जो कि है रिड्यूसिंग एजेंट, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे.
बट पहले समझ लेते हैं ऑक्सीडेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट के साथ कंबाइन हो रहा है, ना तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। सो हाउ वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ये मतलब कहाँ पर, जो कि हम यहाँ पर देख नहीं सकते। बट यहाँ पर एक जो पार्ट है कि जो K2Cr2O7 और H2SO4 है, यानी जो पोटेशियम डाइक्रोमेट विद द H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन अवेलेबल ये यहाँ पर कर दे रहा है इस पर्टिकुलर इथाइल अल्कोहल को, जो कि नेसेंट ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। सो ड्यू टू विच दिस रिएक्शन ऑल्सो गेटिंग द ऑक्सीजन एंड it also making taking place in the presence of the oxygen, and that leads to the formation of the acetic acid compound. तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। सो जो जो हम पार्ट देख रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट्स का। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स है जो ऑक्सीजन रिएक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। सो सच हियर द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट मेक्स ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ द रिएक्टेंट इथाइल अल्कोहल। Such chemical substances which bring about an oxidation reaction by making oxygen available are called oxidants or oxidizing agents. Clear up to this? If you are having any doubt regarding with this, then try to answer in the chat, ask the questions regarding the all your doubts. You can also comment, but don't let your doubt be a doubt only. Try to solve that doubt. तो चलिए आगे देखते हैं। Do you know a variety of oxidants are used to bring about a control oxidation? K2Cr2O7 in the presence of H2SO4, KMnO4 in the presence of H2SO4 are the commonly used chemical oxidants. So these are some of the variety of the oxidants which are available. Hydrogen peroxide H2O2 used as a mild oxidant. Ozone O3 is a chemical oxidant. Nascent oxygen is generated by chemical oxidants and it is used for the oxidation reaction. Here, that is the only part which I am talking about, that is of the nascent oxygen. यहाँ पर दिया ही है. So O3 gives O2 plus 1 nascent oxygen, H2O2 gives H2O plus 1 nascent oxygen, K2Cr2O7, H4H2SO4 gives K2SO4, Cr2SO4, 4H2O and 3 nascent oxygen. KMnO4 reaction with H2SO4 gives K2SO4, MnSO4, H2O and 5 molecules of the nascent oxygen. Remember this part, that this is important, that many of the times it has been asked that on this reaction how many nascent oxygens are formed in the product side. So one nascent oxygen, here one nascent, here 3 molecules of the nascent oxygen, 5 molecules of the nascent oxygen. So this is the one part which we have to keep in mind. We have to remember this. और आसानी सी बात है रिमेम्बर करना। O3 यानी ओजोन का रिएक्शन होगा, तो O2 निकल रहा है, एक ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा, H2O2 में H2O निकल गया, एक नेसेंट ऑक्सीजन। पोटेशियम डाइक्रोमेट में 3 मिल रहे हैं और KMnO4 के साथ 5 मिल रहे हैं। That is a simple one. Nascent oxygen is a state prior to the formation of O2 molecule. It is reactive from the oxygen and is represented by writing the symbol like this. That is only the part. Which is the oxidant used for the purification of drinking water? Why is potassium permanganate used during cleaning water tanks? This is all the two questions. And about this also we have studied in the lower classes, and we are going to study about this in the remaining part also. तो चलिए देखते हैं. We have seen just now that potassium permanganate is a chemical oxidant. Now have a look at the following reaction. This is again one of the most important reaction from all the perspective. तो ये रिएक्शन को हमें अच्छी तरह तरीके से समझ लेना है. And I will also try to explain you in the simple as I had I can explain about this reaction and all. So KMnO4, that is potassium magnate.
that is potassium permanganate, when reacts with the ferrous sulfate, that is or iron sulfate, with H2SO4 leads to formation of potassium sulfate K2SO4, manganese sulfate MnSO4, iron sulfate or ferric sulfate, and water is released. So which compound is oxidized by KMnO4 in presence of acid in this reaction? Of course, FeSO4. तो FeSO4 यहाँ पर oxidized by the KMnO4 in the presence of the acid of the reaction, that is the H2SO4 sulfuric acid. So here FeSO4 is transformed into Fe2SO4 thrice. Let us now see how this conversion is oxidation reaction. तो यहाँ पर इन्होंने तो बोल दिया कि KMnO4 in the presence of acid, that is the H2SO4, Fe2SO4 is oxidized. लेकिन कैसे ऑक्सीडाइज हुआ है तो उसके बारे में हम देखते हैं. FeSO4 leads to formation of Fe2SO4 thrice. आयोनिक रिएक्शन. अभी आयोनिक रिएक्शन क्या है कि चलिए इसका रिप्रेजेंटेशन हम आयंस के साथ देख रहे हैं, दैट इज द आयोनिक रिएक्शन. यहाँ पर हम देख सकते हैं एज वी हैव स्टडीड अबाउट द, लेकिन मैं वापस आपको बेसिक से मतलब यहाँ पर बताऊंगा कि हमारे पास एक होता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज. So positive charge we called it as the cation and negative as the anion. और हमने लोअर क्लास यानी 9th स्टैंडर्ड में we have studied about the cations and the anions, that sulfates are having the -2 as the uh, charge on their charge on that. And so अगर सल्फेट यहाँ पर -2 है तो आयन, आसानी सी बात है आयन यहाँ पर +2 होगा. और ड्यू टू दिस कंपाउंड इज स्टेबल बिकॉज एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर. तो मैंने आपको बोला था कि ऐसा एक भी चैप्टर नहीं है कि जिसका जो नॉलेज है वो आगे के चैप्टर्स में हमें यूज नहीं होगा. सो वी हैव स्टडीड अबाउट द चार्ज दैट formation of the ionic compounds, that by the give and take of the electrons, this is the compound is which is formed, that is the iron sulfate FeSO4. तो यहाँ पर +2 और यहाँ पर -2. दिस इज अ चार्ज ऑन दिस सल्फेट -2 एंड आयन +2. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आयन Fe2 प्लस SO4 -2 गिव्स Fe3 प्लस और SO4 -2. यहाँ पर हमने क्या देखा तो वही आगे हमें एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है. So we have seen here the net change taking place in the above conversion is shown by the net ionic reaction as shown below. Net ionic reaction क्या है? तो Fe2 plus gets formed into the Fe3 plus. ये क्या, ये मतलब यहाँ पर क्या हुआ? So that ion which is carrying the charge of the +2 leads to the formation of the ion Fe+3. तो यहाँ पर फेरस का फेरिक यहाँ पर हमने देखा है. So this net ionic reaction represents the oxidation brought about by KMnO4. यहाँ पर ऐसा क्या ऑक्सीडेशन हुआ है तो that we have to see when ferric ion is formed from the ferrous ion, the positive charge is increased by 1 unit. While this happens, the ferrous ion loses 1 electron. From this, we understand a new definition of the oxidation, which is oxidation means losing one or more electron. Again, try to note down about this. Oxidation means losing one or more electron. This is one of the another definition for the oxidation reaction. पहली डेफिनेशन क्या थी जो कि हमने देखी यहाँ पर कहाँ पर देखी. सो या the chemical reaction in which a reactant combines with oxygen or loses hydrogen to form the product is called as the oxidation reaction. एक तो ये हो गई कि रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है रिएक्टेंट के साथ और यदि हाइड्रोजन गैस लूज हो रहा है, दोनों में से कोई भी एक, सो दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. दिस इज क्लियर टू अस. लेकिन आगे हमें देखना है कि एक और डेफिनेशन जो कि हमने यहाँ पर देखी, दैट इज ऑफ द ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पर समझने की बात क्या है तो चलिए समझते हैं. यहाँ पर जो Fe2 प्लस है यानी वी कैन सी हियर दैट +2 मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, दैट इज माइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. -2 that means that 2 electrons is given, or that it is basically the we are writing here the charge. +2 2 इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन. तो suppose I am getting here the Fe3 plus, that is the ferric. So ferric means here +3 charge is there.
Here there is the plus 3 charge is there. प्लस 3 कब आएगा? प्रोटॉन देने से या इलेक्ट्रॉन देने से? साधारण सी बात है कि मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, दैट मीन्स नाउ आई एम हैविंग द वन इलेक्ट्रॉन ओनली, तो यहाँ पर एक चार्ज बढ़ जाएगा, दैट विल बी द Fe+3। और एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ रहा है, दैट मीन्स द कैटायंस आर, मतलब जो कैटायन है वो बढ़ गए। ड्यू टू दिस दैट वी कैन सी हियर ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन, मतलब एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब रिएक्टेंट जो है वो अगर दे देता है, देन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द new compound, new element with the new charge of the cation, that is called as the oxidation reaction. Clear up to this? Now, can you tell? Look at the chemical equation 6. What is the type of the reaction in which vanaspati ghee is formed from the vegetable oil? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने हमें बोला है रिएक्शन 6 को देखने के लिए। तो चलिए रिएक्शन 6 देखते हैं। Which was the reaction? Reaction 6, reaction 6, reaction 10, reaction 6, तो 6 यहाँ पर दिस इज द रिएक्शन विच वी आर सीइंग। तो यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है कि वेजिटेबल ऑयल वी आर टेकिंग विच इज इन द लिक्विड, ऑफ कोर्स व्हेन वी आर रिएक्टिंग इट विद द हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी ये क्या है, that I don't think I have to explain that nickel catalyst and 60 degrees Celsius. This all thing I have explained in the previous part. सो निकेल यहाँ पर कैटालिस्ट है और 60 डिग्री सेल्सियस के यहाँ पर जो ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द वनस्पति घी। तो यहाँ पर जो वनस्पति घी मिल रहा है तो उनका क्या यहाँ पर कहना है, सो दैट वी विल सी। कुछ ज्यादा याद आ रहा है, वेयर वी वेयर दैट हियर। So the chemical reactions in which reactant gain hydrogen are called as the reduction। मतलब जो कि हमने देखा कि वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ विद द रिएक्शन विद द हाइड्रोजन गैस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द दैट वनस्पति घी एंड ऑल which is taking present with this reaction taking place in the presence of the nickel as the catalyst and 60 degrees Celsius as the temperature। हाँ, so the chemical reaction in which reactants gain hydrogen are called as the reduction reaction। मतलब जो रिएक्शन जिनमें हाइड्रोजन ऐड होते, देन हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होती है हाइड्रोजन गैस जिसमें इन्वॉल्व होता है, दैट टाइप ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली द रिएक्शन इन विच अ रिएक्टेंट लूजेस ऑक्सीजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन रिएक्शन। तो क्या यहाँ पर हम एक डिफरेंस बना सकते हैं कि मतलब ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन कंबाइन होगा हाइड्रोजन निकल जाएगा, और रिडक्शन क्या है, हाइड्रोजन कंबाइन होगा ऑक्सीजन निकल जाएगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और द सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन इज कॉल्ड एज द रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। और जो सब्सटेंस रिडक्शन ब्रिंग करेगा, रिडक्शन लाएगा, दैट इज कॉल्ड एज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेगा दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर अप टू दिस ऑल? So when hydrogen gas is passed over a black copper oxide, a reddish colored layer of the copper is formed। मतलब copper oxide जब we are reacting it with when hydrogen leads to the formation of copper and water। This is simple reaction, but in this reaction we can see here that hydrogen gas is combining with the copper oxide, that is leading to the formation of copper and water। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में, दैट लीड्स टू द दिस रिएक्शन एज द रिडक्शन रिएक्शन।
So when hydrogen gas is passed over black copper oxide, a reddish colored layer of the copper is formed. मतलब कॉपर की एक रेडिश कलर की लेयर हमें वहां पर मिलेगी, which is reductant in this reaction and which is reductant has undergone a reduction. In this reaction, an oxygen atom goes away from the copper oxide, which means that reduction of the copper oxide takes place, whereas hydrogen molecule takes up oxygen atom and water is formed, meaning oxidation of the hydrogen takes place. Thus, oxidation and reduction reaction occur simultaneously. मतलब यहाँ पर oxidation भी हो रही है, as copper is losing the oxygen, hydrogen is taking the oxygen, forming the water, hydrogen taking and copper losing oxygen, copper is formed. So यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों दिखाई दे रहे हैं. द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीडेंट एंड द ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिडक्टेंट. ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर किया गया है. द रिडक्टेंट इज 1 minute. द रिडक्टेंट इज ऑक्सीडाइज बाय द ऑक्सीडेंट एंड ऑक्सीडेंट इज रिड्यूस्ड बाय द रिडक्टेंट. क्या है यहाँ पर? मतलब जो रिडक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडेंट जो है वो रिडक्टेंट मतलब रिड्यूस करेगा. Due to this characteristic of the reduction and oxidation reaction, a single term redox reaction is used in the place of the two terms. Redox reaction क्या है फिर? Reduction plus oxidation. Redox reaction, you will be studying in the further part of the science. So in the class 11th, you will get see a chapter, separate chapter regarding the redox reaction. तो redox reaction मतलब खुद में एक बहुत बड़ा एक टर्म है जो कि redox reaction is the reduction plus oxidation. This is the symbol which we are telling here. Some more examples of the redox reaction are given here. Identify reactant and oxidants from them. H2S, sulfur dioxide, sulfur, hydrogen. तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट पूछा गया है. तो रिडक्टेंट क्या है? जो कि ये करेगा मतलब क्या बोलते हैं हम कि रिड्यूस करेगा. तो यहाँ पर क्या है? जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि कॉपर जो है, तो कॉपर हियर acting as the copper oxide, which is reducing the copper oxide takes place where hydrogen molecule takes up the oxygen atom and water form meaning and oxidation. तो यहाँ पर we have to try to identify. If you are not able to identify regarding this, then you may ask in the comment. But try to solve and think upon this, that it is given for that we should think about this. If oxidation means losing electron, what is meant by the reduction? साधारण सी बात है, ऑक्सीडेशन मतलब लूजिंग इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Fe2 प्लस बाय रिडक्शन Fe3 प्लस बाय मेकिंग यूज ऑफ द सिंबल इलेक्ट्रॉन माइनस. मतलब साधारण सी बात है, यहाँ पर अगर आयन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब एक अगर उसने प्रोटॉन लूज कर दिया, तो साधारण सी बात है दैट इट विल बी लीडिंग टू द Fe2 प्लस चार्ज. तो दैट रिएक्शन ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी. The luster of the surface of the aluminum utensils in the house is lost after a few days. Why does this happen? तो यहाँ पर बोला गया है कि जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं हमारे घर में, तो उनकी जो शाइनिंग है कुछ दिनों के बाद चली जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? Why this is happening? 1 minute. So when the positive charge on an atom or ion increases or the negative charge on them decreases, it's called as the oxidation. क्या है मतलब कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी एटम का बढ़ रहा है और द नेगेटिव चार्ज ऑन दैट एटम डिक्रीजेस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. अगेन वन मोर डेफिनेशन रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन, that when if the positive charge on an atom increases or the negative charge decreases, oxidation reaction takes place. And when the positive charge decreases and negative charge increases, reduction reaction, ion oxidation, Fu oxidation, Fe2O3, Fe2O3 reduction, Fu reaction, Fe. Simple. Do you know a redox reaction takes place during cellular respiration? Cellular respiration के बारे में हम साइंस 2 में इसके बारे में डिटेल एक चैप्टर है that we will be studying later. सो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम देखेंगे वहां पर जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स रिएक्शन है. दैट मीन्स बोथ द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस. हियर द मॉलिक्यूल ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज द साइटोक्रोम C oxidases
helps the transport of the electron to bring about this reaction. For more information, refer to the life process in the living organisms. This is only the chapter which is there in the science too that we will be studying about that. आगे सिर्फ दो और कंसेप्ट है जो कि करोजन और रैंसिडिटी. So we will be taking here a break of the 5 minutes, and we will be back, and we will be continuing with that the two remaining part, that is the corrosion and rancidity, and we will try to finish as early as possible. I will try to take each and every chapter in the live only, so you will be able to ask your doubts in the live streaming. So try to ask your doubts in the live part, or else you can comment in the chat box also, comment box also, and I will be able to answer that questions. So we'll be taking the break of the 5 minutes, and later we will continue with the remaining two parts of, that is the corrosion, and which is the most important part, and transitivity. So be there.
तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम देखते हैं। So, now we will be seeing about the most important part. And definitely in exam also you will see the question regarding with the this concept. As this is मतलब ये एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द करोजन एक्चुअली टेक्स प्लेस। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि जो लोहे की चीज होती है वो कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाती है, बट जंग में जो मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे ऑकर होती है, दैट वी विल बी सीइंग अबाउट दिस, रिगार्डिंग दिस इन डिटेल। So come back and join us as you we are going to see about the most two important topics, corrosion and terrainity. So तो चलिए देखते हैं करोजन। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है जो कि हमें यहाँ पर बोली गई है। Apparatus, four test tube लेने हैं, four small iron nails, rubber core, etc. Chemicals and anhydrous calcium chloride, oil, boiled water, etc. Procedure क्या है? Place four test tubes on the test tube stand. Take some boiled water in one test tube and put an oil layer in it. मतलब क्या करना है? पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे। Take some small salt water in the second test tube. Let there be only air in the third test tube. Take some anhydrous calcium chloride in the fourth test tube. Place a small iron nail in every test tube. Close the four test tubes with the rubber core. Let all the four test tubes remain unattended for a few days. मतलब सिंपल एक्टिविटी है कि चार टेस्ट ट्यूब यहाँ पर लिए गए। पहले में ऑयल लेयर ऑन बॉइल्ड वाटर, मतलब एक टेस्ट ट्यूब में बॉइल्ड वाटर लेना है और उसके ऊपर ऑयल डालना है, ऑयल की लेयर। और सेकंड इसमें सॉल्ट का सॉल्यूशन लेना है। थर्ड इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एयर, और एयर एंड एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। बराबर। दिस इज द सिंपल एक्टिविटी। तो उस सब में हमें एक आयन नेल डालना है। सो तो यहाँ पर एक हम देखते हैं, ऑब्जर्व ऑल द फोर टेस्ट ट्यूब्स आफ्टर फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद उन चारों टेस्ट ट्यूब को हमें ऑब्जर्व करना है। व्हाट डिड यू फाइंड? विच टेस्ट ट्यूब हैड द नेल्स एज बिफोर? बोथ वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। द रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट। हाउ हैव यू सीन द इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन योर डेली लाइफ? देन तो यहाँ पर सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट बोला है उन्होंने, उसके बारे में पहले हम देखते सोचते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग टू वी हैव टू ऑब्जर्व रिगार्डिंग। मतलब उन्होंने क्या बोला है, क्या वो हमें सोचने सोचने के लिए मतलब ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहे हैं, दैट वी हैव टू सी हियर। सो पहले टेस्ट ट्यूब में जो कि हमने ऑयल लेयर और बॉइल्ड वाटर जो लिया था, सो वी आर सीइंग दैट मेल इज सेम। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं है। एयर में भी कुछ हमें इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन एयर और जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड था, तो उसके प्रेजेंस में यहाँ पर हम कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक ब्लैकिश रेडिश स्पॉट जो है, तो दैट इज द रस्ट एक्चुअली। सो the rusting process takes place rapidly in the presence of salt. Have you seen the effect of redox reaction in your daily life? The new vehicles look shiny, on contrary old vehicles look dull. मतलब जो नए जो व्हीकल्स होते हैं, नई जो गाड़ियां होती है, वो शाइनी दिखती है एज कम्पेयर विद द ओल्ड व्हीकल्स। सो ऐसा क्यों होता है? अ सर्टन टाइप ऑफ द रेडिश कलर्ड सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन देयर मेटल सरफेस, और मेटल के सरफेस पे एक रेडिश कलर की सॉलिड लेयर कुछ समय के बाद अपीयर होने लगती है। दिस लेयर इज कॉल्ड एज द रस्ट। इसी को हम रस्ट कहते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। तो
This is the important formula which have to keep in mind and remember regarding all your matlab, exam also asked many times in the activity Fe2O3.xh2. So the rust on iron does not form a simple reaction of the oxygen with iron surface. The rust is formed by an electrochemical reaction. This is again one of the important part कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन अभी हमने तो देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है इलेक्ट्रोलिसिस हमने देख लिया सो ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है दैट इज द रिएक्शन विच इज ऑकरिंग बाय इलेक्ट्रोकेमिकल that will be see here we are having here the description about that part we will be study about this different regions on the surface of the iron makes become anode and cathode तो ये एनोड क्या है ये कैथोड क्या है that is also we have studied about the anode and the cathode अगर आपको याद होगा तो we have studied regarding the anode and the cathode in the electrolysis of the water that we are inserting the two different electrodes that is anode and the cathode and we have seen that hydrogen and the oxygen gases accumulated on the surface of this rods of the cathode and anode. So iron is oxidized Fe2 plus in the anode region. मतलब जो आयन है यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो दिए जाते हैं so that we have seen about the iron is oxidized to Fe2 plus in the anode region मतलब आयन यहाँ पर Fe2 plus जो कि aqueous solution में this is taking place in the aqueous medium so that's why we are naming this type of the reaction as the electrochemical reaction. So Fe, which is in the solid state, when leads to the formation by of Fe2 plus ion in the aqueous solution by losing of the two electrons. तो यहाँ पर electrons दिए जा रहे हैं. So that's why ion is getting oxidized here. So we have seen here that Fe2 plus, that is the plus 2 charge is seen in the product side in this reaction. So इस सेकेंड रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन मतलब एनोड रीजन में यहाँ पर आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हुआ है इन द कैथोड रीजन सो O2 विच इज इन द गैसियस स्टेट व्हेन combining with the hydrogen that is the 4H plus ions in the aqueous medium taking the 4 electrons leads to the formation of the two molecules of the H2O. So when Fe2 plus ion migrates from the anode region, they react with water and further get oxidized to form the Fe3 plus ion. A reddish colored hydrated oxide is formed from the Fe3 plus ion. It is called as the rust. मतलब जो यहाँ पर जो रेडिश कलर का जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है जो कि फेरिक आयन है दैट इज Fe3 plus ion that is only it is called as the rust. It collects on the surface of the that is the metals. So Fe3 plus, that is the ferric ion, when reacts with the four molecules of the H2O water, leads to the formation of Fe2O3, that is the ferric oxide, and dot H2O. That is, this is a one compound with the combining with the water molecule and losing the giving the six hydrogen atoms. Due to various components of the atmosphere, oxidation of the metals take place, consequently resulting in their damage. So this is only called as the corrosion. Iron rust and a reddish colored layer is collected on it. This is corrosion of the iron. Corrosion is a very serious problem. We are going to study about this in the metallurgy chapter. So we will be studying about the corrosion in the detail in the chapter metallurgy. Find out how are the black and silver utensils and patinated greenish brass utensils are cleaned. मतलब यहाँ पर जो ब्लैक एंड सिल्वर यूटेंसिल्स है और जो ग्रीनिश ब्रास के यूटेंसिल्स है वो क्लीन कैसे होते हैं सो पहले हम देखते हैं कि ये ऑकर क्यों होते हैं दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द रैंसिडिटी व्हेन वी यूज ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल फॉर मेकिंग द फूड स्टफ इट इज फाउंड टू हैव द फाउल ओडर कॉल्ड एज द रैंसिडिटी मतलब यदि जो कि हम जो देखते हैं सपोज वी आर टेकिंग वन एग्जांपल हियर
कि अगर हमने कुछ चीजों को मतलब भजिया वगैरह कुछ ऐसे इसको तलने के लिए जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं, अगर हमने वो तेल हमारा काम हो जाने के बाद वैसे ही लेफ्ट ओवर ऐसा पड़ने दिया, मतलब ऐसे ही बाजू में रख दिया, सो आफ्टर सम टाइम वी सी द फाउल ओडर, मतलब उसकी अलग बास आने लगती है. सो दिस इज बिकॉज दैट ऑयल गेट्स rancid. That is the only the concept, that is the rancidity. If food is cooked in such oil, its taste also changes. When oil or ghee is left aside for a long time or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation and becomes rancid. मतलब यहाँ पर जो फूड जो हम तला हुआ जो कि जो सब्सटेंस है, जो आइटम्स है वो अगर हमने थोड़ी देर के लिए मतलब बहुत ज्यादा टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिए, सो दैट बिकम्स द रैंसिड ड्यू टू बिकॉज ऑफ दे गोज अंडर द ऑक्सीडेशन ऑफ द air. That is, they are reacting with the O2 molecule in the air. That we have reaction regarding this. Also, we have seen earlier. Rancidity in the food stuff cooked in the oil or ghee is prevented by using antioxidants. So, antioxidants are used to provide to prevent such type of the rancidity which is occurred in the by the cooked food or the ghee. So, we can prevent them that using the antioxidants. The process of oxidation reaction of foodstuff can also be slowed down by storing it in a airtight container. So यहाँ पर एक एग्जांपल है जो कि चिप्स वगैरह जो वेपर्स वगैरह जो होते हैं, सो that they are closed in the tight pack packet. That is because the rancidity will should not occur in that cases. So as they should not get react with the oxygen which is present in the air and leads to the rancidity of that particular food stuff. So that's why they are packed in a tight container. जो कि हमारे आचार होते हैं जो कि पिकल्स वगैरह जैम्स, सो दैट दे आर ऑल्सो पैक्ड इन अ टाइट कंटेनर so to avoid the rancidity of that particular food. So this is regarding with the chapter all about the third chapter of the science one, that is the chemical reactions and the equations. So we have completed here with our chapter 3. Next, here the exercise questions also, as I have explained each and every part, so it is able to, you can easily answer all these questions regarding that. And one more thing, here is one question which many of the students get ignored about this question. That is, here is the diagrammatic one diagram is given regarding the collected rust, water drop, and some cathode anode reactions are there. So please try to also remember all this type of the reactions. Try to get understand as we have seen about the ion Fe2 plus 2 electrons is giving Fe2O3 dot H2O molecule, that is the rust is formed. So basically this is asked in the activity a part in the exam in the complete the following activity. So try to also find out the answer regarding to these questions also. Then these are all the questions which you can able to answer with all the theory part which I have explained earlier. If you are having any doubt regarding with each of any of the question, then you can ask in the comment also. So that's all. In the next part, we will be studying about with the unit 4, that is the effects of the electric current.